Finally, we see that revivalist movement started by Shah Waliullah gets displaced. We see that there could be number of factors for that. We see this important thing that there is some kind of collision between this movement and the modernity. So we see that the makulati traits were displaced. So this affected the whole process of the Muslim revival and the reform movement. See, the makulati tinge of the movement gave way to the puritanical kind of thrust. A puritanical कह लें, fundamentalist may not be appropriate word, but it might be closer to that. कि वो fundamentalism कह लें या conservatism की बात कर लें vis-a-vis modernity. So with the ascendancy of colonialism or British rule as it took its roots, we see the effects of modernity began to appear in all walks of Indian society. So Muslim reform movement could not escape the impact of this, let's say, change which was coming with the Britishers in the society. We see that finally modernity prevails. Three antecedent traits of modernity transform the character of the movement. अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें तीन जो आई हैं या नज़र आती हैं जिसने ओवर पावर किया इस रिवाइवल मूवमेंट को, उसमें पहली बात थी द वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन एंड मिशनरी एजेंसीज. तो एक तो एजुकेशन है और उसके साथ ही जो मिशनरीज़ के अपने लेट्स से प्रोपगेशन ऑफ देयर ओन कल्चर है दैट अफेक्टेड. दूसरी बात है द ट्रांसलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स इन लोकल लैंग्वेज. तीसरी बात है कि टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग. अब एक ट्रांसलेशन आ गए, ये मिशनरीज़ वगैरह ने किए, अपनी स्क्रिप्चर्स की ट्रांसलेशन हो गए और उसके साथ प्रिंटिंग प्रेस की बात आ रही है. अब जब प्रिंटिंग प्रेस की बात आ रही है तो वी सी दैट द डिसेमिनेशन ऑफ the modernistic kind of let's say values gets a push. और इस push की वजह से वो modernism जो है it let's say permeated the society और जिसकी वजह से एक अप्रोच है, कहने की बात है कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो थी वो फिर सबसाइड हो गई.